सबसे पहले हमें वैक्स मेल्ट करनी है। तो अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो वेल एंड गुड, आप उसमें अपनी वैक्स मेल्ट कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो आप ऐसे गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं। हमारी वैक्स मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे फैब्रिक पे पेंट ब्रश की हेल्प से। आप एक ही फैब्रिक पे बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम फैब्रिक को डाई करेंगे। फैब्रिक को डाई करने के बाद सुखा दीजिए। अब आप न्यूज़पेपर और आयरन की हेल्प से फैब्रिक पर से इजीली वैक्स निकाल सकते हैं। और वैक्स निकालने का एक और तरीका है कि आप फैब्रिक को गर्म पानी में धो दीजिए, उससे भी वैक्स निकल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप वैक्स का थिक लेयर लगाएं, क्योंकि अगर आपका लेयर थिन होगा तो आपकी डिज़ाइन जब आप वैक्स निकालोगे तब ख़राब हो जाएगी।
That's it for today. I hope you like it. Do like, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Bye.